Hello everyone, good evening. Good evening everybody. Good evening everybody. All set? Yes? The sleep company is a company that Okay. Hello everyone, hello. Fine. Hi Vaishali. Good evening everyone. Chalo, let's start with the agenda. Agenda is Vaibhav, good evening. Very good evening. The agenda, we all know what is the agenda. It's quite mentioned clearly. We are starting another batch in which I'll be taking Quant. Fine. My name is Swapnil. I'm teaching or I'm taking Quant LRDI classes for CAT students for the last 19 years. Okay. Worked with several companies. Now I'm working with Rodha. This is all about me. Good evening Avantika. Good evening everybody. Good evening. There are 29-30 odd people. Guys, first of all, first 10-15 minutes is an open house. You can ask questions in chat, fine, and I'll reply your questions as soon as possible, as clearly as possible, as much in detail as possible. Okay, so if you have any question regarding the batch and everything, please feel free to ask about the company, about the offerings, about the course. Fine. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. So please just shoot the questions. Okay. Do you have any question regarding anything? Fine. I'll start from my side. I'll be taking Quant in this batch. I'll be taking all the topics starting from the basics to the advanced to the super quality questions, जिस पे हमारा conceptual clarity बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. So we'll build up on the premise that we have to have the conceptual clarity of each and every topic. We should have the clarity about the exam. Avantika beta, which topic you are talking about? Kunal beta, it takes around 20 to 25 days. Fine. So बहुत जल्दी आने वाला होगा रिजल्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, वीक और 2 मैक्सिमम. ओके ओके. Vaibhav, see, understand what I'm trying to say is it doesn't matter when you join, but if you join early, you'll be, जो cushioning होती है टाइम की वो बहुत important होती है. Once you get used to of the syllabus and everything, you can start your preparation. For the first couple of weeks of the preparation, or let's say 20-25 days, you get to know about the exam. How do we prepare? What is the difference between this exam and up till now what we have done? How do we approach the exam? तो जो 1-8 महीने का टाइम लगता है, आप जितना लेट शुरू करोगे वो कुशनिंग में उतना ज़्यादा आपको देर लगेगी, है ना. और कोई फ़ायदा खास होता नहीं है उसको लेट ज्वाइन करने से, है ना. जब भी आपके एग्जाम्स होंगे, विल टेक अ ब्रेक एंड समथिंग लाइक दिस. लेट्स सी व्हाट वी कैन अप्रोच. बट it's not about the fees only, it's about the timing. The more time you invest in the preparation, the better you get. तो जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना जल्दी आपको एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है. By the time everybody else will start with the preparation, you will be more or less comfortable with everything. Okay. When you prepare for an exam, शुरू के 1-1.5 महीने में हम सबको पता है क्या होता है. हमें पता नहीं चलता एग्जाम कैसा है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस चीज़ में वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस. यस. ओके. प्रतीक बेटा, कोर्स कंप्लीशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती एप्टीट्यूड टेस्ट में. हम कोर्स तो खत्म कर ही लेते हैं, बट वी कैन कीप ऑन टेकिंग क्लासेस, बूस्टर क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस, रिवीजन क्लासेस. सो वी कीप यू एंगेज्ड टिल कैट सो दैट यू कैन प्रिपेयर थरली. कोर्स तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. इट विल बी अराउंड मई, जून और मे बी जुलाई द एंड. उसके बाद हम रेगुलर क्लासेस लगाते हैं
बूस्टर क्लासेस, रिवीजन क्लासेस. तो कोर्स कंप्लीशन जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें ना कोर्स नहीं है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, फिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है जो पेपर में आने वाले हैं. यू गेट क्वेश्चंस विच आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी. यू हैव टू बी थॉरो विद द कंसेप्ट्स. सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, है ना. सो वी कीप ऑन practicing, give you in the classes. That is how we approach the paper. Avantika, I'll be taking all the quant classes beta for this particular batch, to the R2 batch. Fine, you can go for the fees also. It's around 12,500 or something like that. 12,000, 10,000 something like fees. You can go to the channel. तो फीस है 12,000 रुपये के आसपास कोर्स का फीस है. आई बी टेकिंग ऑल द क्वांट क्लासेस इन द बैच. फाइन, आई विल कवर अराउंड 3,000 प्लस क्वेश्चंस. फाइन, एंड आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द कंसेप्ट इन डिटेल. सो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बेनिफिट ये होता है कि कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है, कोई नंबर ऑफ क्लासेस का लिमिटेशन नहीं है. जितना हम डाइजेस्ट कर पाएँ उतना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है ना. MB, this will be a English batch. I'll be taking classes in English and Hindi both, so that both the kind of students feel comfortable in the class. None of the students should be left out. Okay, so if you join this batch only or any other batch, you'll feel that things are not different from the English batch or Hindi batch or something. You'll be able to understand, because in most of the batches students are from different backgrounds. So some of them are very much comfortable with English, some of them are not that much comfortable with English, but they are comfortable with Hindi. So obviously we'll talk in both the languages, so it's going to be absolutely comfortable for you. Prateek, this is the batch I'll be taking Quant in. Yes, and VRC will be taken by probably KD sir and Ayush sir combined, if not individually. Fine. So I'll be taking Quant in this, but if you want, you can join. Avantika, I think I have answered your question, बच्चे. Bevav? Tell me. Yes, any other question regarding anything? Okay, we'll provide all the support for the students. Online support hota obviously regarding everything. We'll be providing mock sessions, mock discussion sessions. We'll be providing all the video solutions for all the questions in mock, be it Quant, LRDI and VRC. So we can understand it thoroughly, because written solutions sometimes you are not able to understand just by looking at the written solutions. We'll be discussing written as well as the video solution for each and every question provided. You'll be getting all the study material which is needed. Fine, and I can bet on that even if you are able to solve 80% the study material provided by us, you'll not feel that questions are whatever the questions you get in exam or whatever the exam you talk about, you'll not feel the question बहुत ही नया है या मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ना. You'll definitely be able to understand most of the questions. You'll be able to solve most of the questions also in exam. Yes, beta, it's going to be 10:15. Fine. First class is tomorrow, so I'll be taking first class of Quant. Fine, and it's going to be 10:15 to 12:15, or it depends upon 12:15, 12:30. Flexible time है, so 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है. It's not a problem. Okay. Krish, it's okay. It's all more the reasons to start as early as possible. If you're not good with maths, you have to understand there are many students who are not good with maths, but they can be good with aptitude. Fine. Once we understand the difference between maths and aptitude, you'll understand the exam में score करना बहुत मुश्किल काम नहीं है. You should be fairly good enough with the concepts, not with the maths. आप समझ रहे हो? Because whatever the maths we have learned up till now, 11th, 12th, 10th, जहाँ तक भी आपने पढ़ा है, we have understood every question with the help of some sort of formula, and we were not bothered about कि formula होता क्यों है. Now in these classes what we do, we understand why do we use this formula, where do we use formula, and what is the concept behind it. So once you understand the concept behind it, you'll understand कि इसको approach कैसे किया जा सकता है. For an example, it's just like driving. If you know driving,
फोर व्हीलर ड्राइविंग अगर आपको करनी आती है या बाइक चलानी आपको आती है, तो बाइक कोई सी भी हो चलानी आती है हमको, वी कैन ड्राइव एनी बाइक, दैट्स व्हाट द आइडिया इज. So once we understand the fundamental of driving, we can drive any two-wheeler or four-wheeler, fine, whatever the driving of I have learned. So similar to this particular analogy, क्वांट भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं जहाँ पर आपको ना प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि मेरे को कंसेप्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी. फाइन, कंसेप्ट समझ में सारा आएगा. नए नए क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ हम सीखते हैं तो वील अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ एवरी कंसेप्ट ऑल्सो. तो उसमें आपका ना गुड और बैड का कोई चांस ही नहीं है. ऑब्वियसली बी कंफर्टेबल सूनर और लेटर विद क्वांट, डोंट वरी. Not a problem, beta. There are many students who are not from maths background. Shriyam, I will suggest if it is possible, you can gain some more experience. If it is a 1 year experience, it will definitely help you. Fine. And once you have an experience, things are not going to be that bad. Gap koi nahi puchega. Even if they ask, you can justify it later on. Not a problem that I was doing something. So that was an issue few years back. Now it's not much of an issue. When it comes to the work experience or the gap year. But 5 months experience, if you can make it somehow to 12 months or 18 months, that will definitely help you at the time of selection. Especially if you have done MBBS, as you said. If you have done MBBS, you'll be like a unicorn for them. Find somebody from MBBS background is going for an MBA. Mridul, it doesn't impact much if you have a work experience. Do you have gap prior to the work experience or after the work experience? मतलब अभी आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब कर रहे हो और उससे पहले गैप था. So off late you are not doing anything, है ना? That may cause a problem because if you have worked and you have left the job and now you are not doing anything, so that they may ask, you have to justify your calls कि भाई मैं क्यों नहीं जॉब कर रहा हूँ, whatever I am doing for the last couple of years. And if it was the case जब आप पहले गैप था, अभी आप currently are working, that will be much more beneficial for you. Nishant, beta, you can I'm on the official group of Telegram. You can contact me, you can message me directly. My name is Swapnil. Okay. Yes, guys. Any other question? I will definitely reply. I generally reply on the Telegram group. Sooner or later, it can be a little late. A couple of hours time I'll take sometimes because I generally I'm busy with things. But I definitely reply to all my students, whoever is trying to contact me. Okay. See, it doesn't make much of a difference of 1 year's gap. Somehow, if you can, apply, you will be getting 2 years gap. Somehow, you can land up a job that will be much more beneficial. It's going to be advantage to you because if you have a work experience of around 12 months and if you're applying for MBA or doing an MBA from the B school, they will definitely consider your work experience in a brighter side. Yeah, Mridul, it can justify, but you have to, prepare your answer accordingly. Fine, because there are so many things you have done, so many things you have not done. So whatever the question they are going to shoot, you have to justify your answers. See, there is nothing called correct answer or incorrect answer as such when it comes to GDPI. You have to justify your answers. Whatever you have done, then why you have done that. That is what something they look for.
Well, it's the perfect timing for you guys as well, because see, you can see many people are asking, will gap year will affect my selection chances or something. You'll be completing your graduation in June 2025. You'll be taking CAT 2025. Yes, जब आप CAT 2025 में जाएंगे, अभी इस बार आप CAT का पेपर देंगे, फाइन. और आप नवंबर में CAT का पेपर देंगे, आपको 26 में एडमिशन मिल जाएगा. तो आपका गैप उतना ज़्यादा नहीं होगा. इफ़ यू स्टार्ट लिटिल लेटर, तो आपका गैप 2 साल का हो सकता है. विल बी सो मच not so good shape. I will not say bad shape, but not so in a good shape कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा. 2 साल का गैप ज़्यादा हो सकता है, फाइन. तो अगर आपके पास 1 साल का गैप होगा, दैट्स प्रॉब्ली दे विल नॉट आस्क. जनरली दे डोंट बॉदर अबाउट इट एज सच. Krishna, you can definitely convert Blacky. Let's see how many calls you get. Fine. If you are saying that you are economic weaker section, so the 100 is a very good score. Definitely you'll be getting calls from multiple B schools. है ना? Not much of a difference, beta. 2 different people are taking the classes, but I can promise you, both of us are having the best of the interest at our heart for students. We want both of us to grow together. Simple as that. So whatever the best possible I can do for my best. I will do for my best. That is for sure. That I can assure you. I will leave no stone unturned to help you when it comes to preparation for CAT. Okay. Those who know me, those who have worked this, those who have been taught by me previously, they know what can I do for my students, what do I do for my students, and what kind of quality I provide to my students. I'm not boasting myself, but that is something which I love. So if you love your job, you are bound to provide best of the services to your students. Am I right? नहीं होगा बेटा. अब मैं I'll tell you what will happen. If you join batch 2, you'll be getting all the classes or access to the batch 2 classes. You can transfer your batch for some reason. If you feel like that I have to join some other batch, timing is not suiting, something for some reason, if you want to change your batch, you can take complete transfer from batch 2 to batch 1 or batch 1 to batch 2. That depends upon your comfort zone and choice. Okay. Any other question, guys? Yes, you can attend classes only using mobile. You have to download Rodha app. App will work fine. But if you don't have a laptop, that is not a problem. अगर आपके पास होगा तो आपको देखने में पढ़ने में थोड़ी सुविधा ज़्यादा होती है, but mobile will work fine. But you have to download the app, Rodha app. That will be perfectly alright, not a problem. Okay, Seth? Yes, obviously, Viral. If it is a course, it has to be something which is going to cover all the aspect of an exam. तो कोर्स अगर है तो सारे एग्जाम के सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये चीज़ पढ़ा देगी बाकी आप खुद में पढ़ लो. ऐसा नहीं है. If it is something related to any exam, that will definitely be covered. You'll be surprised to know we take around 15-16 classes for decision making for Z. Fine, that is probably highest in the entire industry. तो क्योंकि पूरा का पूरा एक सेक्शन है डिसीजन मेकिंग का जेट में, और उसके बिना एग्जाम क्लियर करना काफ़ी मुश्किल है. तो काफ़ी सारी क्लासेस डिसीजन मेकिंग की करते हैं. just give an example that if the question paper or the exam has a specific requirement, we'll definitely provide the support for it.
Okay, chalo. So everything includes GDPI, beta. This is full comprehensive course. If you join full comprehensive course, there are two kind of courses, three kind of. You can join individual fragments of the course, Quant alone or something, the LRDI alone. But if you join the comprehensive course, you'll be getting everything from the very first class to the very last class. Yes, Moin. Thank you so much. I am looking forward to taking the batch as well. Beta, it is something which I have not quantified, Nishant. But I can promise you that we have to understand. I'll just answer the question in general for all of us. There are so many things which we might not have according to the requirement of the different IIMs. You have to understand. Fine. But if you don't have, let's say, मान लो मेरे पास 12th में मार्क्स नहीं थे, फाइन, और किसी IIM में 12th में 10th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट राइट नाउ? वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ. So let's focus on something which we can do. What we can do, we can prepare for CAT accordingly. We can get best of the possible percentile. We can prepare for GDPI. We can give it our best shot in GDPI. Perform distinctly well. जो भी calls आएंगे उनमें से best available call convert करना है. You have to understand your profile might not suit for your particular B school, but there is not a chance that no B school will call you. Okay, so we have performed very well in GDPI. If you have performed very well in aptitude test, you'll definitely get multiple calls, but some of the B schools probably may not call you. That doesn't make any sense कि हम उसके पीछे बचे हुए कॉलेज के ऊपर ध्यान देना छोड़ दें. प्रॉब्लम ये है कि हमें देखना है हमें MBA एडमिशन जो लेना है वो एक ही कॉलेज में लेना है. वी कैन नॉट डू MBA फ्रॉम 3 or 4 or 5 different B schools. Am I right? So we have to understand where we can do. The two things which we can do if you are doing if you are under graduation, you have to perform very well in graduation, whatever the years you are left with. And if you are going to take CAT 25, you have to perform very well in CAT 25. You have to score highest possible percentile if you can. Third thing, which is very important, necessary to be done, is you have to perform very well in GDPI. Okay? उसके बाद जो कॉलेज से कॉल आएंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. कॉलेज विल मे कॉल यू, मे नॉट कॉल यू, बट उसके पीछे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज्ड. इफ द कॉलेज इज नॉट गोइंग टू कॉल यू, दैट इज ओके. वी कैन नॉट बी वेरी मच श्योर एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स दैट ये कॉलेज कॉल करेगा और ये कॉलेज कॉल नहीं करेगा. Aviral, I have answered your question, I guess. है ना? There are so many things which you might not be have from the different point of view or from the point of view of different B schools. But one thing we have to understand that जो B school हमें बुलाएगा उसके लिए हमें preparation करनी है. सारे B schools की preparation हम नहीं कर सकते. Whatever the shortcomings in your profile are there, you cannot overcome that right now. Are you getting my point? So there are certain B schools जो आपको नहीं बुलाएंगे, but there are ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे B school नहीं बुलाएंगे. Fine. बहुत सारे B schools आपको कॉल करेंगे और बहुत सारे B schools में आपके एडमिशन के पूरे चांसेस हैं. सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर द टेस्ट, नो B school will call you. Am I right? And if you prepare for the test, score very good percentile, many B schools will call you. We cannot be sure about the B schools right now. कौन से कॉल करेंगे, कौन से कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज उसके बारे में जाने का कोई फायदा भी नहीं है ना. Whatever the B school will call us, that depends upon the percentile. नयन बेटा अभी टाइम लगेगा, उसमें 1-1.5 महीने का टाइम लगता है. या मोर देन सफिशिएंट बेटा. 350 डेज आप ये सोचो ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारे घंटे पढ़ने के लिए, है ना. सो नंबर ऑफ डेज पर मत जाओ. यू हैव ऑलमोस्ट अ ईयर to prepare for an exam which is not very difficult. It's an aptitude test. If you have clear cut directions, if you are really working hard, this is more than sufficient time. Aviral, you can. I just answered your question. I was answering your question only. You cannot be very much sure about कि कौन सा college call करेगा, कौन सा college call नहीं करेगा, but you'll definitely be able to do good MBA from a very good B school if you are getting a very high percentile in actual CAT. Okay? ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको सारे के सारे B school कॉल करना बंद कर दें. हाँ, आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क होने चाहिए. That's it. Okay?
चलो, आई गेस दिस विल बी इट फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर. थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं जस्ट टू गिव यू द आइडिया हम कैसे पढ़ेंगे, है ना. यस बेटा, प्रिपरेशन ऑफ GDPI इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रिहेंसिव बैच. एब्सोल्युटली करेक्ट. Yes, Karthikeyan, you can obviously join the classes and follow the classes. I'll be taking this class in both the languages, Hindi and English. Obviously, questions are going to be in English. I'll explain the question in English as well as Hindi. So you'll be able to understand everything. Don't worry about it. Nayan, I've answered the question. Beta, thoda sa video rewind करके देखना. I'll get to know the answer what I'm talking about. See, मैं एक बार फिर से बताता हूँ. Whatever the shortcomings in your profile you have, you should not bother about those shortcomings right now because you cannot control them right now, है ना. आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे 10th-12th मार्क्स कम है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. हमारे ग्रेजुएशन में अभी तक के मार्क्स कम है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. व्हाट आई कैन चेंज, व्हाट इज समथिंग विच वी कैन कंट्रोल, योर कैट स्कोर, योर GDI परफॉर्मेंस, GDPI परफॉर्मेंस, समथिंग लाइक दैट. तो कॉलेज कॉल करेगा, डेफिनेटली कॉल करेगा. इफ यू वेरी गुड परसेंटाइल, कॉलेज आपकी चॉइस का होगा कि नहीं होगा, सारे IIM कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट डिपेंड्स. But he'll get definitely multiple calls from many good B schools. Everything is included in the package. Everything. No hidden fees, no hidden charges, nothing extra you have to pay. Yes, you'll be getting practice material, you'll be getting sectional test, you'll be getting mock test, you'll be getting online classes. You're not understanding what I'm trying to say. For an example, a very good question, Heath. What I'm trying to say is generally when you go for any offline coaching, they take 3 or 4 classes, maximum 3 classes of geometry or let's say or time speed distance. We take around 6-7 classes of time speed distance. So you'll be getting a hell lot of practice in the classes itself. Okay? You'll be getting so many questions to do in the classes only that you don't require anything else. If you repeat the classes, we'll be getting booster classes. So you'll be getting number of questions which from each and every topic that you don't need any sort of extra practice. You'll be getting mock test, you'll be getting sectional test, you'll be getting recorded lecture. So उसके beyond practice करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपको इतना भी नहीं कर पाओगे आप जितना आपको प्रोवाइड किया जाता है. Yes, Sagar, that will improve everything. It's not about 5 books per month. You need to be, avid reader. You need to read books. You need to read newspapers to get, the basic idea about what is going around the world. है ना, थोड़ा सा जानकारी के लिए, language improve करने के लिए, you have to read books. That's what it is. You cannot be read 5 books a month. You can read 2 books, 3 books whenever you feel like. If the books is very hefty, you cannot read 5 books in a month. Am I right? Probably it will take 15-20 days or maybe a month to read even a single book sometimes. Simon, basically, see, DILR is more about practice. You have to practice questions. If you practice questions, you'll bound to get, clear with the concept. See, DILR में problem क्या होता है? DILR के section में, the problem with the section is there is lot of information in the question. Am I right? And if you process this information, तो इतनी सारी information याद रखना मुश्किल होता है. तो first of all, first and the foremost step in improving LRDI section is to getting used to of retaining the information, making shortcuts out of the information, है ना. वो धीरे धीरे क्वेश्चन करते जैसे बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, ऐसे आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होता है, रिटेंशन इन्फॉर्मेशन का इंप्रूव होता है, आपकी स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन की इंप्रूव होती हैं, आपके डेटा को एनालाइज करने का स्किल इंप्रूव होता है. द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल सॉल्व, यू विल डेफिनेटली गेट यूज्ड टू ऑफ इट. ओके, यस, इट इज वैलिड. Yes, it is valid. Again, I'm answering a question. I'm not able to recollect the name. Indian it is mentioned. You have to understand. आप बार बार जो सवाल पूछ रहे हो मैं सब लोगों को एक ही जवाब दे रहा हूँ. आप ये समझो आपके प्रोफाइल में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से ऐसा कभी नहीं होगा कि नो कॉलेज विल कॉल यू, है ना. इफ यू आर स्कोरिंग 99.9 percentile in CAT, there are many B schools which will call you even if you are having some of the shortcomings in your profile. आपको अभी से ये मेक श्योर नहीं करना है कि मेरे को कौन सा कॉलेज कॉल करेगा, कौन सा कॉलेज कॉल नहीं करेगा. दैट इज बिकॉज दैट इज समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. माई जॉब फॉर द नेक्स्ट couple of not couple of years, for the next year is
to prepare thoroughly, write the test in a manner जहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा स्कोर आए. फिर उसके बाद देखते हैं which college is going to call me, which college is not going to call me, and according to my requirement, according to the fee structure, according to the placement, according to the location, according to the course offered, we'll choose the best possible option out of the available options. बेटा आपको जॉब यू हैव टू completely understand one thing. Keep on searching for job, fine, and prepare accordingly. For you, the best way of preparing is online. So because you can whenever you feel like you can attend the class, whenever you feel like if you are going to miss a class, you can watch the recorded lecture or something, fine. You can start preparing as soon as possible. You might be able to understand that the CAT was not the exam जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है. इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक थिंग्स, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स, यू कैन क्लियर द एग्जाम. एम आई राइट? सो see, I know the problem is there, but you have to understand the only solution to this problem is look for a job, even if it is not very highly paying. कम पे भी करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, just to show something for that I have done this thing for the last 1 year, okay, and prepare simultaneously. Speed maths we can start, but generally what I do, whatever the shortcuts I need to understand, I start, incorporate those shortcuts, those areas of understanding in the topic itself. So I start with the topic and I explain every shortcut of that topic in the class itself so that you can retain it for a longer period of time. Okay, Vaishali? चलो, is it okay all of you? Have I answered your question? चलो, वेल एंड गुड. थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं. हमने काफ़ी कुछ देखा, पिछले काफ़ी समय से हम बातचीत कर रहे हैं. Yes, Sumit, you can contact me on Telegram. If you are a Rodha student, you will be able to contact me on the Telegram. I have a number. I'm in most of the groups. But you have to be very much clear. If you prepare for an MBA and do for CFA, it's going to be difficult for you to manage both the things. But in any case, if you are able to do this, that's completely your choice. That will definitely help you if you are able to clear the exam. Okay, CFA अगर clear हो जाता है तो. चलो शुरू करें. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ हाउ डू वी अप्रोच. हमने इस सेशन में पिछली बार जो क्लास किया था उसमें हमने आपको परसेंटेज की थोड़ी सी जानकारी दी, बेसिक आइडिया अबाउट द परसेंटेज. अभी हमारे पास जो सेशन है उसमें थोड़ा सा हम प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेंगे. विल नॉट बी सॉल्विंग टू मेनी क्वेश्चंस बिकॉज द आइडिया वाज टू लेट यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर इन R2 बैच. यस, beta, that doesn't concern me the price. I don't have any clue about the price, what is the price and what is the changes going to be, but whatever the price is there, that is something which you have to pay. Fine. Yes, so you can contact the support, they'll probably let you know. Okay, but even if you want to join next week, why can't you join this week? Because in any case, if you are missing any classes, you'll be able to watch the recording and everything. Percentage we have done. What is profit and loss का थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं. I have made I've decided some question to discuss some questions. एक बार शुरू करें प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा देखें भाई. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से प्रॉफिट लॉस हम सब जानते हैं इसके बारे में, बट वी स्टिल मेक सम मिस्टेक्स इन इट. ओके,
क्या होता है प्रॉफिट लॉस? जैसे मैंने बोला 120 रुपीज़ का कोई आर्टिकल है, दैट इज सीपी. मेरी एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. I'll not be discussing too many questions. 2-3 questions will give you the idea how we are going to approach the paper. Okay, is 120 rupees cost price mein what is included? That includes everything: packaging, packing, raw material cost, labor charges and everything. So 120 rupees ka shirt I am making a shirt of rupees 120. Okay, fine. Now if I want to sell this shirt at 180 rupees, so that is selling price. कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस जो आप इन्वेस्ट करते हो, एंड सेलिंग प्राइस द प्राइस इस पे आप शर्ट बेचते हो. यस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. So what is the profit percentage if I look at it? 180 minus 120 divided by 120 into 100. Yes. So article का जो profit that is 60 rupees and the cost price was 120 rupees into 100, that will make it 1/2. The profit percentage is 50%. Do you agree with this? Yes, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया जस्ट टू मेक श्योर. अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इफ आई कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दैट विल आल्सो वर्क. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? 120. व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस बेटा बताओ? 180. आई एम आस्किंग टू कैलकुलेट रेशियो 60 into 2 and 60 into 3. दैट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. दिस इज द फर्स्ट वे, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है. ठीक है, दैट इज सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड इट. व्हाट डज इट मीन? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वॉज 120 and the selling price of the article is 180. That means if we divide both the numbers by 60, what will you get? 60 into 2 120, 60 into 3 180. इसका मतलब अगर प्राइस कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 2 रुपी है और सेलिंग प्राइस 3 रुपी है, व्हाट इज द प्रॉफिट यू आर गेनिंग हियर? बताओ भाई, कितने का प्रॉफिट है? इफ यू आर सेलिंग एन आर्टिकल विच वॉज वर्थ रुपीज 2 and you're selling it for rupees 3, what is the profit here? Tell me. What is the profit in terms of rupees? Can you reply? Yes. Yes, Nishant, it is 1. Profit और loss हमेशा CP पर होता है. CP मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है. What is the CP here? 1/2 into 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, that will make it 50%. Okay. Those who want to get the clarity of the concepts of percentage, I have done the similar question, the first part. इसका जो फर्स्ट पार्ट है आज की क्लास का, मैंने लास्ट क्लास में परसेंटेज के थोड़े से कंसेप्ट डिस्कस किए थे. इफ यू गो थ्रू इट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली. ओके, सो दिस इज, आई गेस देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. एम आई राइट और नॉट? प्लीज गाइज रिप्लाई. ओके, वैशाली, सुमित, अतुल, निशांत, अविरल, हीत, Nayan, yes, ठीक है, fine. Now what I know is this is profit percentage. अब मुझे मालूम है world is not that much fair. Okay, so बदकिस्मती से मेरी दुकान पालिका बाजार में है, तो हाँ जी, तो मुझे I make a box, okay, and I write some price on it, that is 360 rupees. Okay, so that is called market price. Market, आपने देखा होगा कोई भी आर्टिकल जब आप लेने जाते हो तो डब्बे पे एक प्राइस लिखा होता है. That price में written in the box is called market price, है ना. So I have to provide some sort of discount to the customer even after mentioning कि fixed price shop है, फलाना है, ऐसा है, वैसा है, but I have to provide some sort of discount. तो डिस्काउंट अगर मैं दे देता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, इस पर कभी डिस्काउंट नहीं होगा. डिस्काउंटेड जो होता है डिस्काउंट, दैट इज ऑलवेज ऑन द प्राइस विच इज मेंशन्ड ऑन द आर्टिकल. आपने देखा होगा स्लिप लिखा होता है. यस, सो जो स्लिप मेंशन्ड है या जो प्राइस मेंशन्ड है बॉक्स पर, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मार्कअप. मार्कअप कितने रुपए का बताओ भाई?
360 रुपीज़ का आप आर्टिकल बता रहे हो and the cost price of the article was rupees 120. So what is the markup? 240 rupees. If I ask you what is markup percentage, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना. मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. Okay, so markup is what? 360 minus 120. We already know this is markup. Yes. So 360 minus 120. But I'll take my time to explain everything because there are many people who are doing it for the first time. So they need to have the clarity of everything, whatever we are discussing. Okay. So 240 divided by 120 into 100. So that is 2 into 100. 200% markup है मेरे पास. Yes. Those who are attending the class, please reply yes or no. Mani, Moin, Mridul. Yes, very good. So that is markup percentage. अच्छा, percentages निकालने का मेरे पास एक और टूल होता है. Just told you. Whatever the party are under consideration will take the ratio of it. तो मैं फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती. CP कितना था बेटा, बोलो भाई? 120. What is MP? 360. Markup में जो party under consideration है, that is CP and MP. The ratio of these two will come out to be 1:3. कितने का मार्कअप है बोलो भाई? 2 रुपीज का मार्कअप है. 3 minus 1 which is 2. 2 रुपीज का मार्कअप है. बेस क्या होता है परसेंटेज में? बेस इज कॉस्ट प्राइस हेयर बिकॉज मार्कअप इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस. दैट इज 1 into 100 बिकॉज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज. 2 कहां से आया? 3 minus 1 upon 1 into 100. Exactly this is what I am trying to do here. है ना? So that will make it 200% markup. Okay. Do you agree with this? Yes. So this is markup percentage. Now तीसरा aspect इस पर लेकर आते हैं. Some shopkeeper is doing this. मान लो हमारी शॉप है and a customer is coming to your shop and this is what he is going to see. Customer को क्या क्या दिखाई देगा बताओ? Customer को दिखाई देगा CP? No. कस्टमर को क्या दिखाई देगा? एसपी? नो. कस्टमर को क्या दिखाई देगा? एमपी? यस और नो? यस. व्हाट कस्टमर कैन सी? एमपी. फाइन. आप उसको बोलोगे भाई 360 रुपए का शर्ट है. फाइन. ही विल स्टार्ट बार्गेनिंग अबाउट इट एंड यू विल प्रोवाइड हिम सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट. आपने बोला ठीक है मैं डिस्काउंट दे देता हूं एंड यू ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 180 रुपीज डिस्काउंट. प्रॉफिट कितने रुपए का था बताना भाई? व्हाट वाज द प्रॉफिट? 60 रुपीज. एंड व्हाट वाज द मार्कअप इन टर्म्स ऑफ रुपीज? 240 रुपीज. ओके. तो आप ये बताओ, इफ द कस्टमर इज आस्किंग कि भाई डिस्काउंट दो मुझे, सो व्हाट इज द प्राइस कस्टमर इज लुकिंग एट? 360 रुपीज. And whatever the price you are asking him to pay, that is 180 rupees. Do you agree with this? Okay. So what the discount you are offering? 180 rupees. So discount जो है that is MP minus C, MP minus SP. वो प्राइस, whatever the price at which I am doing the deal, that is selling price. इस पर कुछ नहीं होता है. You'll not calculate profit on selling price. You'll not calculate discount on selling price. You'll not calculate anything on selling price. Selling price is the price at which the deal is done. Okay. So discount is what? What is the discount you are offering? Batana bhai. 360 minus 180. 180 rupee discount you are offering. If I ask you what is discount percentage? Discount percentage is nothing. Discount. नीचे क्या आएगा? मार्केट प्राइस. ये ध्यान रखना, बेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन
प्रॉफिट और लेस डिस्काउंट. डिस्काउंट हमेशा उस प्राइस पर होता है जो आर्टिकल पर मेंशन होता है, दैट इज मार्केट प्राइस. सो व्हाट इज द डिस्काउंट यू आर ऑफरिंग? 180. yes or no? On the basis of 360 into 100, that is 1/2. You are offering 50% discount. That is discount percentage. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? फाइन. द सेम थिंग कैन बी डन विद द रेशियो ऑल्सो. यहां पर बेटा लिखने की जगह नहीं है. आई गो फॉर ऊपर जो लिखा हुआ है. व्हाट इज एमपी? 360. What is SP? 180. You take the ratio, that is 2:1. So what is the discount you are offering? 2 minus 1. Discount is offered on what price? Price mentioned on the article, which is ₹2 into 100. That will make it 50% discount. Okay. So whenever it comes to calculating percentage change, we can go for directly ratio rather than retrieving the formula. So the only thing which I need to understand in solving this particular thing, that profit or loss के लिए बेस क्या होता है बोलो भाई? CP. डिस्काउंट के लिए बेसिस MP. That's it. Is that okay all of you? चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जस्ट टू गिव यू द बेटर आइडिया अबाउट इट. फिर बाकी तो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे है ना. दिस इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू डिस्कस. दिस विल क्लैरिफाई एवरीथिंग व्हाट वी हैव डन हियर. ओके फाइन. एक बार इस क्वेश्चन को वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई, अ मिनट और टू? The profit realized by a shopkeeper on selling an article is 42.6/7% of the discount offered. तो ये परसेंटेज वैल्यू है, पर जो प्रॉफिट is 42.6/7% of discount. Okay. Now you have to understand one thing here. What we have to understand, is it profit percentage or profit? Tell me, is profit percentage 42.6/7% of discount, or profit is 42.6/7% of discount? Tell me. Profit, not the profit percentage. It's not profit percentage. This one is not the correct interpretation. This is the correct interpretation. The value of profit. Is that okay all of you? Please reply. Yes? The value of profit, not the profit or the percentage discount. Yes or no? Sonia, Nishant, Heath, Shreya, Shreyash, Moin. Please guys reply. Do you agree with this? But the only incentive I'm going to get out of is if you reply. है ना? If you reply, I'll definitely be able to explain it in a better manner. है ना? थोड़ा सा participate करो. ऑनलाइन का ये प्रॉब्लम जो है वो आपको ओवरकम करना पड़ेगा. The more you interact, the better the things are going to be. Okay? ठीक है. चलो अच्छा बताओ, ये पहले तो ये नंबर देखो, अजीब सा नंबर लिखा हुआ है. ठीक है. 42.6/7%. फाइन. 42.6/7% को अगर मैं देखता हूँ, दैट इज व्हाट 42 इंटू 2, 42 इंटू 7 इज कितना होगा बताओ? 294. 300/7%. डू यू एग्री विद दिस बेटा? यस. 43.75% का मतलब कितना होता है बोलो? इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, ये 50%,
हार्दिक बेटा, जब तक आप ना इसमें एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी. द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इनटू इट, यू विल फाइंड यार इतना कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ लॉजिकल है. सब कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है. सो वंस यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इनटू इट, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और आपका जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना. 43.75% का मतलब कितना होगा, बोलो भाई. इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, दैट विल कम आउट, बोलो, 700 by 16%. Okay? Yes. Now percentage can be written in terms of fraction. अच्छा बताओ, हाफ का मतलब कितना परसेंट होता है? हाफ को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दे तो 50% हो जाता है. एंड इफ आई आस्क यू 50% का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे सर 50% का मतलब होता है, परसेंट मीन्स 1/100 और डिवाइड बाय 100, so that is 1/2. So if this is percentage, this can be converted into fraction, so that is 3/7. Yes or no? (300/7% means 3/7, and 700/16% means what? In terms of fraction कितना होगा? 7/16. ठीक है. ओके. डिस्काउंट किस पर होता है? कैन आई से दिस जस्ट अंडरस्टूड अभी डिस्काउंट किस पर होता है, बोलो भाई, बोलो. डिस्काउंट किस पर होता है? मार्केट प्राइस पर, है ना. डिस्काउंट किस पर होता है? मार्केट प्राइस पर. यस. नाउ द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फॉर एनी नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज कुछ दे नहीं रखा तो हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं. ये बताओ, कैन आई अज्यूम सम वैल्यू फॉर एमपी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपी? टेल मी, बताओ. कुछ भी ले लो, ऐसा नंबर जो 16 से मल्टीप्लाई होता हो. यस, वी कैन टेक एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 16 भी ले सकते हैं आप, नॉट अ प्रॉब्लम. बट एक आधी जीरो लगा होता है तो आई फील लिटिल कंफर्टेबल, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन एमपी, बिकॉज एमपी का 7/16 आई हैव टू कैलकुलेट, सो आई अज्यूम एमपी टू बी. ना बेटा कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है. दैट इज वन इन द सेम थिंग. एमपी और एमआरपी एक ही बात है. मैक्सिमम रिटेल प्राइस और मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस या एडवर्टाइज प्राइस सब एक ही बात होती है. द प्राइस विच इज मेंशन ऑन द आर्टिकल इज, यू कैन नेम इट एनीथिंग. ठीक है भाई, अब यह क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. व्हाट इज एमपी हियर? 160. व्हाट इज डिस्काउंट एज पर द क्वेश्चन? Tell me, what is discount as per the question? ₹70. Okay. So what is selling price? What is selling price? Tell me, what is selling price? Article का जो price था that was 160. You are giving a discount of ₹70. आप जब डिस्काउंट देते हो तो कहां पहुंच जाते हो, बोलो भाई? सेलिंग प्राइस पर. कहां पर पहुंच जाते हो? सेलिंग प्राइस पर. 360 का आर्टिकल, यू ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹180, वी रीच टू द सेलिंग प्राइस. यस. सो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 160 इज द मार्केट प्राइस minus discount, so that is 160 minus 70, that will make it 90. Okay, so this is what we have converted. Third step, what is mentioned in the question? What is profit? ये हमेशा नहीं होता, क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसके लिए दे रखा है. व्हाट इज प्रॉफिट? बोलो बेटा जल्दी से.
यस, ठीक है. व्हाट इज प्रॉफिट? What is the discount I'm offering? 70. What is CP? Selling price. CP कैसे निकालते बताओ? Cost price plus profit is selling price. Selling price minus profit is equal to cost price. Yes or no? So what is cost price बोलो भाई? Selling price कितना था बेटा? 90. प्रॉफिट कितना है? 30. Yes, absolutely correct. So cost price is rupees 60. Very good. Now the question is asking for profit percentage. What is the profit percentage बोलो भाई? Profit upon CP into 100. Yes, yes. प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट तो ये है ना, और कॉस्ट ये है. $30 by 60 into 100, there is 250. Profit percentage is 50%. Okay, this is the basic gist of profit or loss account. यही 4-5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, है ना. So what I can conclude here, profit is equal to SP minus CP, loss CP minus SP. Yes or no? Fine. CP plus markup. Yeah, I can say markup is nothing. MP माइनस CP. ठीक है भाई. डिस्काउंट कैसे होगा? डिस्काउंट क्या होगा बताओ? डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP. यस नो? परसेंटेज चाहिए तो इनको हम इसके लिए प्रॉफिट बेस क्या होता है? CP होता है. इसके लिए बेस कितना होता है? CP होता है. इसके लिए बेस क्या होता है? MP होता है. दैट्स इट. तो whenever we solve profit and loss question, we have to just look for the opportunity कहाँ पर CP, SP और MP का रिलेशन निकल के आ जाएगा. If you understand this relation, इसको बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है. Okay? Now, what we need to learn while solving this question, हम इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना. मैंने यहाँ पर MP लिखा. सुनना मेरी बात सब लोग ध्यान से. इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, बस फंडामेंटल क्वेश्चन था तो मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया. Let's say MP is 60. Yes or no? Discount is 7 by 16 of MP, that is 70 rupees. So what is the selling price? 90 rupees. What is the profit? Profit is 3 by 7 of 70. Yes or no? So what is the value of profit? 30. That means cost price was 60. So what is the profit percentage? 30 by 60 into 100. That will make it 50%. ये इस क्वेश्चन का एक्चुअल वर्थ है. I hope you have taken the point from this particular question. है ना? So हमारे पास ये प्रोफिशिएंसी आ जाती है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके. अभी तो ये जो मैंने आई एक्सप्लेन विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए. वी जस्ट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, वी अंडरस्टूड द थ्योरी. दैट्स हाउ वी अप्रोच इट. यस और नो? Guys, this will be it for the today's lecture. Thank you so much for your participation. See you in the classes. Fine. I hope to see you in the classes. Thank you so much. Have a great day.
बाय बाय एवरीबॉडी. 11 to 12 इज द सेम अटेम्प्ट बेटा. आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी. यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विद द क्वेश्चन. जेट में जो क्वेश्चंस आते हैं आप प्रीवियस की और सॉल्व करो एक बार. 24, 23 का पेपर सॉल्व करो. डेफिनेटली बी एबल टू अटेम्प्ट 11, 12 क्वेश्चंस राइट नाउ. ओके, हाँ चलो. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय एवरीबॉडी.